Hello everyone, welcome back to our channel Prom and Mentor. So, provisional list of round 1 has come. You can directly go to the site MCC and you can scroll down and you will find a mentioned area where it's written provisional list round 1. Click onto that link and you will be available to the PDF of the same. So you have to check your rank as to the aforementioned and you can directly correlate which college has been allotted at your rank. If you haven't got any, don't be saddened enough. There are multiple rounds which you will be waiting for. So provisional list आ चुकी है, but final list नहीं आई है. So what is the difference between provisional and final list? Provisional का हमेशा MCC final list से पहले provisional list provide करती है. Provisional का मतलब ये होता है कि the results are still not final. If you have any kind of queries, you can directly contact onto the MCC and you can claim the same. If by any chance you had been allotted to any college which you haven't filled in the choice filling, if there is any kind of errors from the MCC side, that will be corrected before the final results come out. Most of the time, the provisional and the final list comes as the same. So if at all, if any kind of queries you have, you can directly contact onto them. This was the provisional list and the final list का mention before. So अब एक और चीज है ये, on the date today, that is 19th of November, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, बट आर केस वॉज नॉट स्पोकन आउट. मीन्स हमारा नंबर 35 था बट हमारे में कोई मेंशन नहीं किया. सो द सेम थिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड अंटिल November 26, दैट इज ऑन ट्यूसडे. सो वी हैव टू वेट अंटिल द सेम एंड वी हैव टू वेट कि आगे और क्या होने वाला है. बट एज आई थिंक वी नो नाउ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ज्यादा कुछ हमें हियरिंग की तरफ से कुछ दिखने वाला नहीं है. काउंसलिंग विल हैपन द सेम एज इट इज हैपनिंग नाउ. There might be a little delay from the technicality that rounds में थोड़ा सा delay आ सकता है, though provisional list has come out. So final list में थोड़ा सा 2 से 3 दिन लग सकते हैं या फिर कल भी आ सकता है. So stay tuned and stay blessed.